So today is 15th February 2023 and I'm here with you to carry out our daily activity, that is newspaper analysis. Okay, so all set? Are you all set? Huh? I don't want to ask how's the Josh. Huh? Are you all set? Chalo, I think we are definitely live. है ना? Let me switch off the ads. Yeah. So जय हिंद, good to see. देखता हूँ कौन कौन आए हुए हैं. First name on the list is Rohit SPS. SPS is directly watching this telecast from US. ठीक है. अंश, कैलाश, अशोक, रोहित, दर्शन, वैभव, चिन्मय, विराट, जिशान, यशराज, सानू, अभी चौहान, अंशुल, शाक्या. Okay, चलो तो good morning to you all and जय हिंद to everyone. So we are here. तो कौन guess करेगा कि which paper is going to be the first paper today? Any guesses? Any guesses? Which is going to be the first paper today? देखता हूँ कौन guess लगाता है सही. Let me see your guesswork. तो पहले ही प्लीज लाइव कर दो सेशन को. अभी अच्छा बहुत बच्चे भी आ गए हैं. पुलकित, जितेंद्र, तनु, कृष्णा, भूमिपुत्र, राहुल, अमित, सागर, रोहित, सागर, दीप, ये वत्सल, सौरभ, ये अभी आए हैं. चलो गुड. चलो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, Indian Express. This is lying on top, Indian Express. And I always say, आपा कोई उसमें वो नहीं रखते हैं डिप्लोमेसी कई चीजों में. How's the sound? ये बताओ. I'm using the mic for the first time. How's the sound? Is it better than previous days? बता दो मुझे फटाफट. Is it better than previous days? The sound, quality of sound. Somebody said कि sir please use mic in the morning. मैंने कहा ठीक है यूज कर लेंगे. Huh? Let me see. Okay. So there is no diplomacy as far as my favorite things in life are concerned. So when I say favorite newspaper, I always say Indian Express. And for defense aspirants, जो SSB की तैयारी कर रहे हैं या जो written exam की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा recommend करता हूँ number 1 choice and number 2 is the Hindu. And then of course many other papers. अपने को कोई किसी से वो नहीं. ठीक है. So everything is okay, very nice. Sound पे भी clear and good. Thank you. So we'll start with Indian Express. This is the front page and इसमें दो बड़ी खबर है. We'll start with the good news first. This is about signing of the 470 aircraft deal by Air India. आपको पता है Air India is now owned by Tatas, which originally started Air India, got back Tata's couple of years back. आपको पता ही. So Tata's has signed during the Aero India show. मतलब ऐसी बड़ी deal है. Is going to give a boost to the aviation sector, not only in India, in the world. That the deal has been announced by 3 heads of government. आप सोच लो what money can do and what commercial deals can do. ये समझो जरा इसका. Let this sink in कि Joe Biden, Macron and our Prime Minister Modi, all of them have simultaneously announced this deal. टाटा ने नहीं करी, इन्होंने करी. So ये बहुत बड़ी बात है. And Joe Biden is very happy. US President, he says 1 million US jobs. Historic, says Macron. तो ये आप समझ लो पहले कि बोइंग जो कंपनी, 2 ही राइवल्स हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर. बड़े राइवल जो बड़े एयरक्राफ्ट बनाते हैं, 2 हैं. पता है आप लोगों को? बोइंग है अमेरिकन, बोइंग इज अमेरिकन एंड एयरबस इज फ्रेंच. फ्रेंच के साथ हमारा पुराना रिश्ता है. मैं कई बार अपनी क्लासेस में आपको बता चुका हूं. इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है. राफेल एयरक्राफ्ट उनका है. ठीक है. राफेल एयरक्राफ्ट उनका है. और इससे पहले भी they have been very active in the Indian aviation sector and Indian Air Force.
और कौन सा एयरक्राफ्ट था जो फ्रांस ने दिया हमें? एनीवन हु कैन टेल मी विच अदर एयरक्राफ्ट आर वी फ्लाइंग विच इज फ्रेंच ओरिजिन? एयरफोर्स, बताओ, तुम्हारा मैं टेस्ट भी लूंगा, ठीक है? तो 470 एयरबस एंड बोइंग प्लेन्स फॉर एयर इंडिया, फॉर रोल्स रॉयस इंजन, सुनाक से स्काई इज द लिमिट. हाँ, फोर्थ हेड ऑफ स्टेट, ऋषि सुनाक, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ही सेज रोल्स रॉयस इंजन स्काई इज द लिमिट, कि जितने मर्जी इंजन ले लो, फिट करो, आप उड़ाओ, ठीक है? सो दिस इज वेरी बिग एंड वेरी बिग फॉर इंडिया एंड वेरी बिग फॉर द वर्ल्ड एविएशन सेक्टर. इसमें 70 एयरक्राफ्ट आर वाइट बॉडीड, जिसमें एक रो में 3 रोज आर देयर. इफ यू सी, हमारे नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट हम इंडिया में फ्लाई करते हैं, जनरली 2 रो होती है, 3-3 सीट की, है ना? ऐसे होता है ना, काफी टाइट होता है इंडिगो में, और लोकल फ्लाइट करते हो. व्हेन यू फ्लाई इंटरनेशनल, द वाइट बॉडीड, ठीक है? ईच एयरक्राफ्ट कैन कैरी 300 to 410 पैसेंजर्स. कितने? 300 से 450 लोग फ्लाई करते हैं. एंड दीज आर लॉन्ग हॉल. दिल्ली से तेल भरा, बंदे बैठाए, दरवाजे बंद किए और सीधा जो है वेस्ट कोस्ट, यूएस के वेस्ट कोस्ट पे जाके उतार देते हैं, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और इधर उधर, ठीक है? ये है पावर वाइट बॉडीड एयरक्राफ्ट की. एंड सम विल बी नैरो, which will be used for narrow arm and the neighboring sector. अगर आपने बांग्लादेश जाना है, नेपाल जाना है, श्रीलंका जाना है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, इस एरिया में जाना है, तो यू विल यूज द नॉर्मल एयरक्राफ्ट, जिसमें कि जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 140 से 170 के बीच में होती है, ठीक है? तो एक की डबल है, एक की हाफ है. सो ये हमने जो है डील साइन किया. इसका अंदर जाके भी बताऊंगा इस डील की कुछ खसूसियत. तो आया मजा बच्चा पार्टी? चलो थम्स अप दे दो और सेशन को अभी से लाइक कर दो, ठीक है? पुट योर थंब देयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर अभी तक नहीं किया. ऐसी फ्री में देख रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है? सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, लेट्स ग्रो ऑल्सो. सो नाउ द अदर इज नॉट सो गुड न्यूज. दिस इज ऑन द being called a survey that is on the income tax snooping down on BBC offices in Bombay and Delhi simultaneously yesterday in the afternoon, which has created a lot of again political sniping at each other, with opposition calling it attack on press, and the ruling party's spokesperson saying they are corrupt and they must be held accountable and they are anti-India. So that is BBC, British Broadcasting Corporation. इसका थोड़ा बता दूं आपको. The BBC is an independent agency. UK Prime Minister cannot tell BBC ऐसे कर दो. It's an independent agency under the Royal Charter. So they have the Royal Charter from the King or Queen of UK for hundreds of years. So no government, no British government can interfere with the working of BBC. So that is BBC for you. Once upon a time, a go-to agency for any news. Go-to agency. Anyway. So इसके पीछे ही there are two. Firstly, about this 470 Airbus and Boeing planes for India. इसका डिटेल दिया हुआ है कि कितने हम बोइंग से लेंगे, कितने एयरबस से लेंगे, ठीक है? सो बट ये ऐसे नहीं आएंगे कि एक दिन इतने आ जाएंगे. स्लोली एन एयरक्राफ्ट विल बी मेड एंड इट विल बी डिलीवर्ड. इट विल बी मेड एंड डिलीवर्ड. जैसे रफेल्स आए थे, पहले एक आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, अब पूरे हुए. So when you place an order, accordingly money will go. Accordingly money will also go. And these are sometimes on lease, and बहुत complicated structure होता है इनका financing का. Because this deal, I was reading somewhere, could be worth $34 billion. $34 billion. पाकिस्तान का फॉरेस्ट रिजर्व $3 billion है. उनके पैसे नहीं है. वो 1.1 billion के लिए IMF के आगे घुटने टेके हाथ फेर गया, प्लीज साइन कर दो सर. 1.1 बिलियन तेल आ जाएगा देश में. तो ये $34 billion की डील है. मे बी ओनली वन साइड. I really don't know the entire thing. It is huge. At the same time, there is an interview of the Indian Army Chief, General Pandey. उनका इंटरव्यू है. He is in, of course, all the 3 chiefs, the defense minister, everybody is in the Aero India show. Aero India is the biggest show in the country or even in Asia. So all of them there when he was visiting, he has given a certain interview and he says we are looking to induct new technology along LAC, line of actual control, against China. So he's talking of mini, nano and micro drones, UAVs, Apache helicopters, which we are going to get from US very soon, 6 of them.
Then demand for 250 helicopters with HAL by the army. So he is talking of light combat helicopters. तो क्या क्या हम यूज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे अगेंस्ट चाइना ऑन द LAC is what the chief is talking about. ठीक है, अब जाएंगे सीधा अंदर. As I say, जिसको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना आता, प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. अगर अभी भी नहीं देखी है, many of you may have started now. Once this session is over, please go back to my YouTube channel and type how to read newspaper. वो वीडियो पढ़ लो, तुम्हारे भाग खुल जाएंगे, बिकॉज तुम्हें पता लग जाएगा कि अखबार पढ़ना कैसे. जो 2-2 घंटे आप लगाते हो अखबार पढ़ने में, इट विल बी रिड्यूस टू 30 minutes. So that, and then there is a video on how to make notes on current affairs. Then there is a video on how to use maps. मैप आपके पास, कल भी एक बच्चा मेरे पास हम बात कर रहे थे. I asked him, do you have maps? No. Do you have atlas? No. Do you have dictionary? No. Do you have thesaurus? No. मैंने कहा, then how do you expect to become an officer, whether armed forces or civil services? These are tools you need to have. So anyway, late start हुए, कोई बात नहीं, अब start कर लो. Now this is the wonderfully designed the editorial page of the Indian Express, and the worldly wise is very, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ but class में कम quote करता हूँ. This is Benjamin Franklin. He says, whoever would overthrow the liberty of a nation would begin by subduing the freeness of speech. To whoever wants to, control the liberty of a nation starts with the free speech. This Benjamin Franklin says. Now, this is Daylight Knock. This is a very, very hard-hitting article, editorial by the Indian Express. And they mince no words. They say IT survey of BBC officers and the BJP's running commentary on what is anti-India smack of bullying and a sorry trend. So this is, they say it is bullying and it is a very sorry trend. Less than a month ago, Union Ministry of Information and Broadcasting invoked emergency powers under Article 202 of IT rules to order online media platforms to take down links sharing the first part of BBC documentary. On February 14, so एक महीना पहले this was unprecedented कि सबको बोलो take down this documentary, don't watch it. Then colleges में people started watching it, universities में. Probably the documentary would not have been watched as much as it was after banning. And then within a month, they have gone and did this to the officers. So this is how it is. Then there is a Sanjay Baru. Sanjay Baru, you are aware, also wrote a book on Dr. Manmohan Singh. He was media advisor to Dr. Manmohan Singh and a key functionary in the previous government. He's written an article, Billionaire Without a Base. This he talks of Adani Group doesn't enjoy the popularity that links company with a country. So ये मैंने कल भी आपको बताया था कि LG, Samsung और ये जो साउथ कोरियन कंपनीज हैं, they are linked to the company. जैसे आप देखो कंपनी को, यू नो साउथ कोरिया की कंपनी. Same thing when you हमारा टाटाज है. I was in Mozambique about 30 years back when the World Cup going on, and the World Cup was on their television sponsored by Tata's. वहाँ टाटा की बसें चलती थी, हमें बहुत खुशी होती थी. Tata, they used to call Tata. So we identify when we say Tata, okay, India, we feel proud. It's our company, है ना? तो ऐसे ही, so here he says कि while Mukesh Ambani's Reliance is now identified with India, कि इंडिया की कंपनी है. However, Adani Group is not identified with India because of the rapid progress, amazing every sector. So that is what he's talking of in this article. And then of course this is on Hindi in the world. Hindi meet हो रही है, वर्ल्ड हिंदी मीट हो रही है फिजी के अंदर वर्ल्ड हिंदी का बहुत बड़ा एक वो होता है एनुअल, वो फिजी में हो रहा है. दिस इज ऑन द वुमेन्स प्रीमियर लीग. कल मैंने बताया था स्मृति मंदाना एंड all this girls getting very hefty contract for the first women's premier league which is going to take place very soon. उसके बारे में. Then we have then very nice article on by C. Raja Mohan. Whenever you see Raja Mohan, he writes on Raja Mandala, Indian Express में, Japan and the global south. So here he is talking of under the prime ministership of Fumio Kishida, Tokyo has been pushing the G7 to engage developing nations while casting aside
preconceptions and recognizing their historical and cultural backgrounds. So this is very much connected to us. Japan, we have very good relations with Japan, and Japan has not only with India, with many other countries, developing world के साथ. Japan is part of Asia, so nice article on global South and Japan. अभी लेके आता हूं आपको explained में there are three very important articles here. First is this, the missing deputy speaker post and what the constitution. ये हमें भी नहीं हुआ कि since long time we don't have a deputy speaker in Lok Sabha. पहले क्या था, the ruling party picks up its own candidate because house उन्होंने चलाना होता है. So the speaker of Lok Sabha is always from the ruling party. ठीक है, but as a matter of protocol, as a matter of courtesy, as a matter of democracy, the deputy speaker's post is always given to the opposition. Always. कि भाई deputy speaker आप नाम बोलो, propose करो, हम उसको वो कर देंगे. But now we have no deputy speaker in the Lok Sabha. So this case has gone to the courts and they're explaining the missing deputy speaker, the post, and what the constitution says. ठीक है. Now we come to this. आजकल balloon shooting चल रही है. Balloon shooting is going on all over the world, and suddenly the world's attention is drawn onto this high altitude balloons. So ये balloon जो है, US has shot down 8 of them. These are supposed to be Chinese balloons, and there's a war of words. So here Amitabh Sinha is talking about the US and China trade charges of spying on each other using balloons. For what purpose are balloons usually sent into air? What makes them useful for surveillance and how common is such? तो इसमें ये कवर किया इस आर्टिकल में. इट्स लो कॉस्ट. अगर कहीं डिस्कशन हो, मेरे बच्चों आपने क्या बोलना, बलून इज लो कॉस्ट. आपने छोड़ दिया कुछ, उसमें आपने कैमरास और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दिए फ्रॉम वेयर यू कैन पिक अप द डेटा, मच चीपर देन लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. सो हियर he is talking of high altitude balloons. The use goes back to 200 years back. 200 years back, so balloons are being flown. And bigger balloons can be as large as football stadium. जो बड़ा balloon, it can be so big, as large as a football stadium. Go up 40 to 50 kilometers from the ground. So 40 से 50 kilometer. Aircraft fly at about 35 kilometers above जो हम fly करते हैं. So this balloon goes 45 to 50 kilometers तक जा सकते हैं. And they are typically used for scientific missions. They are used for surveillance. तो उसके बारे में है. ठीक है. तो science, technology and climate change के ऊपर है. Now the last article here is massive protest in Israel over Netanyahu's proposed judicial reforms. ये इजराइल की फोटो है, और एक तरफ तो they are having a standoff with the Palestinians in the West Bank. But this is local Israelis up in arms against their government. ये बहुत interesting है. क्यों ऐसा है कि Netanyahu has come back with, it's not a majority government, in a coalition of far right parties हैं. बिल्कुल right wing है इनकी. What they are trying to do now is they are trying to bring in massive judicial reforms. कहने का सिर्फ simple एक ही मतलब है. They want to appoint the judges. Something which the debate we are seeing in India also. So the elected representatives, they say we want to select the judges कि कौन होंगे उनके सुप्रीम कोर्ट में, इजराइल सुप्रीम कोर्ट में जजेस. एंड दूसरी और चीज की है कि एनी जजमेंट पास बाय द कोर्ट कैन बी नलिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी. कि आपकी मेजोरिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा होगा, अब लाओ पार्लियामेंट में और उसको कैंसिल कर दो. सो दिस इज वेरी डेंजरस. एंड दिस इज टॉकिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी in a democracy. तो इजराइल में you can see the picture, huge protests in Israel by the people कि this not. So let's see क्या होने वाला आगे. But there's always judiciary, how to tame the judiciary is what always the elected representatives always plan for. Let's see what happens again. So now this is again from the US. Nick Haley, she's announced her this thing to stand for presidentship in 2024 from her party. That is from Trump's party. So she's going to challenge her boss. Trump was her boss.
last time. Nikki Haley, you know, she's also an Indian origin, and she's 51 now, so she'll be a young president if she gets elected. इनकी जो लाइफ है, she is born to Nimrata Nikki Randhawa, a Sikh family, and Haley is third Indian American to run for US presidency. Bobby Jindal ran for 2016, Kamala Harris 2020. Haley's father was a professor in Punjab Agriculture University, and her mother received a law degree from Delhi University. So, she's announced, she's the first to announce her. Let's see what happens. Now, this is on the earthquake in Syria and Turkey. More than 35,000 people dead. Now they're looking for shifting the homeless. But जो बहुत interesting story है वो यहाँ है. Can you see this picture? Sorry. ये बेबी है, ये बेबी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. हर नेम इज आया. तो मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा. हर नेम इज आया. शी वॉज फाउंड आफ्टर 4 days of search, and still her placenta was still attached to her mother, all dead, and she was alive, a newly born baby. So she is called Aya. Aya in Arabic means a sign from God. Aya in Arabic means sign from God. तो इसकी picture, she has thick curly black hair, very good looking little baby girl. तो ये फोटो वायरल हो गई दुनिया में. वायरल होते लोग इसकी हेल्प के लिए जो है, people are pouring in money and all that. So now they put a police guard because somebody may kidnap her. तो आया earthquake से तो बच गई आया, and now she's in the hospital under a proper police guard because a lot of people are claiming to be her relatives to take the money, and there is fear that she may be kidnapped. My God, human and human greed का कोई मुकाबला नहीं. Turkey has already put 130 people in jail for making money out of this earthquake. This is, of course, war in critical phase. Kyiv appeals for jets. So Ukraine has gone on an offensive for collecting weapons. The Zelensky has visited UK, has visited France. They're tying up with other European countries. This is their defense minister holding a handkerchief, जिसके ऊपर की एक aircraft बना हुआ है. So trying to give us jets, because next phase of the battle, when it starts, once the winter is over, is going to be very, very critical. Then we have a sad story from Kenya. Kenya is facing one of the biggest droughts. अकाल पड़ा हुआ है कीनिया के अंदर. अकाल पड़ा हुआ है कीनिया के अंदर, and Kenyan government ने बोल दिया pray to your gods. Pray to your gods, because the country is in very bad state, and there is a picture of some people going for getting water. This is the economic pace. कभी हम cover करते हैं, आजकल तो काफी cover कर रहे हैं because of this Heidenberg Adani episode. This is one good spark for the Adani group, where their Adani Enterprises posts 820 crore profit against 12 crore lost last year, and because of that their share has marginally climbed up, and this is a one bright spot for the beleaguered group. Then of course Bharat Forge is a real solid Indian company. Bharat Forge, many years back I read that axles world over are made by Bharat Forge, which is an Indian company. Then we have a very interesting human story. This is a tribal girl from Kerala. Her name is Minnu Mani. Minnu Mani has been selected in the Women's Premier League, and their family can't believe they've never seen 30 lakh rupees. She's signed by 30 lakh rupees to Delhi Capitals, and very heartening. तो ऐसी stories मैं इसलिए cover करता हूँ कि थोड़ा सा not all is bad in the world. There are good people and there are good things happening to good people in the world. ठीक है, इसलिए चलो अभी आते हैं हम हिंदू पे. हाउ इज द जोश? प्लीज न्यूज़पेपर रख के अपना जो क्वेश्चन है आप लोगों के वो रखना, आप इसमें डाल देना. मैं लास्ट 10-15 मिनट्स आपके क्वेश्चंस के पक्का जवाब दूंगा. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज हिंदू.
And here we start with IT team survey BBC officers over violations of laws. ठीक है. So I wish that waited for some time. एक महीना पहले तो डॉक्यूमेंट्री पे इतना बवाल मचा था. Or you could have called them, making this kind of this thing sometimes doesn't send the right word against a publishing, against a journalistic house. Now wholesale, मैंने आपको कल बताया था रिटेल इन्फ्लेशन का is gone beyond the comfort level, but wholesale price index is eased to 4.7% in January. So wholesale price index is cooled, is okay, it's in comfort level, but retail price, तो ये समझो wholesale और retail में फर्क क्यों है इतना, तो that is on the rise. इस आज मैं बहुत बढ़िया आपसे लिथियम के बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में. कल क्वेश्चन पूछा था सर अब लिथियम आ गया अब क्या करेंगे, मैंने कहा अभी बताते हैं उसके बारे में. तो बहुत डिटेल आर्टिकल है इसमें. या दिस अगेन न्यूज फ्रॉम द एरो शो, गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम देयर. दिस इज बोन B-1B Lancer lands in air. This is the long range bomber of US. Long range. It can fly any part of the world and bomb. तो ये श्रीमान जी आए हुए हैं बैंगलोर हिस्सा लेने के लिए एरो शो में. They have come from Guam. Last year they traveled all the way from Dakota. 24 hour कितने घंटे की पुरानी फ्लाइट. तो you can imagine. So this B-1 is called Bone. B-1 for Bone. So this is long range US लॉन्ग रेंज बॉम्बर है. ये ट्रेडिशनल बॉम्ब भी कैरी करता है, डम बॉम्ब, ढुम ढुम गिरने के लिए ऊपर से. अदर आजकल एवरीबडी इज गोइंग फॉर ग्लाइड बॉम्ब्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज बॉम्ब्स एंड ऑल. सो ये है. एंड अर्जेंटीना एंड इजिप्ट शो इंटरेस्ट इन तेजस. तो अर्जेंटीना एंड इजिप्ट दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन बाइंग आवर तेजस Mark 1 which is in service in India. Okay, now we come to the editorial. Here is the disturbing dilation. Untamed inflation risks hurting domestic consumption. ये जो कल हमने कवर किया था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट इज 6.5 एंड रूरल इन्फ्लेशन इज 6.9. इसका मतलब द स्ट्रेस इज ऑन द रूरल इंडियंस, वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है. सो उसके बारे में ये है कि अनटेम्ड इन्फ्लेशन रिस्क्स हर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन. तो अगर आप ये कंट्रोल नहीं करोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं सामान और कम पैसे, ज्यादा पैसे में कम चीज खरीद पाएंगे, गैस, ऑयल, कुकिंग ऑयल. तो रिटेल इन्फ्लेशन में सारी चीजें आती हैं, रोज सब्जियां, फ्रूट्स, दूध, आटा, जो आम लोगों को इस्तेमाल, तो दैट कैन अफेक्ट आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन. दिस इज एन आर्टिकल अगेन ऑन द अडानी स्टोरी. इसको हम काफी कवर कर चुके हैं. द अडानी स्टोरी एंड द इंडियन नियो लिबरलिज्म बाय C.P. Chandrasekhar, who is with the Perry Umas. He's a former professor of JNU. And then, of course, here. This I wanted to cover to you in detail. Ladakh, a fragile region, needs autonomy. I've done 2 tenures in Ladakh, and plus I'm also CEO, first CEO of the Save the Himalayas Foundation, which is based in Leh. तो लद्दाख की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है. And we are seeing what is happening in Uttarakhand and other places. And recently, there was fast by Sonam Wangchuk, who's a Raman Magsaysay Award winner. He's a celebrity person. He's an engineer who has transformed education in Ladakh and an innovator now. He's a big innovator. So that has drawn attention to Ladakh on the 6th schedule. And the Lieutenant Governor of Ladakh has been removed, and now a new Lieutenant Governor has been, Brigadier Mishra has been sent from Arunachal to go to Ladakh. So here in this article, he says that a constitutional status that enables locally determined pathways can help avoid disastrous track that many other parts of India. He says these people find their own solutions, far-flung areas, remote areas. Delhi से इनको बताना कि तुम ऐसे करो, and people who get posted there for 1 year, 2 years don't understand the real requirement there. So entire logic of this writing this article by Ashok Kothari is that इनको autonomy दो इस लद्दाख को, and let them decide what kind of buildings they want, where do they want infrastructure progress, how do they
कैन दे बिकम देयर कार्बन जीरो एरिया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैसे प्रोग्रेस करेगा, उनकी पानी की बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो हाउ डू दे मैनेज देयर रिसोर्सेज. सो that is why he says, and Ladakh and Delhi must work together. Delhi must give them the funds and Ladakh must have the autonomy to use them. इसके बारे में है. हाँ. Now another interesting thing, this is on education more than wealth determines women's marital age. ये इशू मैंने बहुत बार डिस्कस किया अपनी क्लास में, बहुत बार. जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि फाइनली पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होती है. वुमेन्स एजुकेशन, women in the workforce, irrespective of religion. So this is based on the Assam case where 4,000 FIRs have been lodged against people for underage marriages. So he says, कल भी मैंने बात किया था, when you put a heavy hand on this without seeing the socio-economic conditions, you may land up in a negative kind of a feedback. So they say that the root cause of all this is education. We must educate our girls. We must ensure they go to school, and once they go to school, they stay in school. चाहे घर से लाना पड़े 10th के बाद, must get admitted to 12th, must be encouraged to go for higher education, even if you have to give them free loans, free जो भी करना हो करें. So that is what they are saying. And the data, this is a data by National Health Survey. ये government का data है. It says that women who are educated tend to have less children, tend to delay their marriage and tend to delay even their children. तो ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है कि हमें अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए एंड पढ़ाई के बाद उनको जॉब करने के लिए एनकरेज करना चाहिए. ऑटोमेटिकली दिस प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एज मैरिजेस, टीन प्रेगनेंसी एंड ऑल कैन बी टेकन केयर ऑफ. एक बहुत हिंदू में बहुत इंटरेस्टिंग आता है, दे से 50 years बैक, 50 साल पुरानी, और आई कैन रिलेट टू देम बिकॉज 50 years बैक आई वाज अ 10-year-old बॉय इन मिलिट्री स्कूल और मुझे अखबार पढ़ने का शौक हुआ था. सो दिस इज फर्स्ट मिग 21 एयरक्राफ्ट हैंडेड ओवर टू एयरफोर्स. तो आज के दिन 50 साल पहले पहला मिग एयरक्राफ्ट वाज हैंडेड ओवर टू इंडियन एयरफोर्स, एंड तब डिफेंस मिनिस्टर वाज वीसी शुक्ला एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वाज वीपी नायक एंड द एयर चीफ वाज ओपी मेहरा. और ये नासिक के पास जो है पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हुआ था, मेड इन इंडिया. ये मेड इन इंडिया था, मतलब असेंबल्ड इंडिया, HAL का. सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है 50 साल पहले. और आज हमारे पास राफेल है और भी एयरक्राफ्ट आ गए एंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हम अपना बनाएंगे. तो बच्चा पार्टी मजा आ रहा है? फ्री में नॉलेज मिल रही है सुबह सुबह आप लोगों को, और मस्ती भी हो रही है, थोड़ी रोस्टिंग भी हो रही है. लिवरेजिंग J&K's लिथियम रिजर्व्स. ठीक है, कल भी मैं अपनी एक क्लास में था, BOCC के बच्चों के साथ. एक बच्चे ने पूछा, सर अब तो J&K की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि लिथियम मिल गया. सो आई सेड वेट, इट इज इन्फर्ड ओनली. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू 5.9 million tons inferred resources lithium discovered in J&K? What are the environmental concerns, extraction procedure? What are the geostrategic implications considering the geopolitical sensitivity of the area? तो कितना बड़ा गैम्बिट इस ऑथर ने, प्रकाश काशवान ने और धनाश्री जयराम ने कवर किया. एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिक्स में इसमें क्या हमारे देश का हिस्सा है, इट इज इन रियासी एरिया, वी कैन माइन व्हाटएवर. लेकिन कमाल की बात क्या है कि बाय 2050, वी आर इन 2023, बाय 2050 द डिमांड फॉर लिथियम इज लाइकली टू गो अप बाय 500%. सोच लो जरा, 2050 तक लिथियम की डिमांड दुनिया में 500 गुना बढ़ जाएगी. ये मेरे हिंदी वाले भाइयों के लिए 500 गुना डिमांड बढ़ जाएगी अगले 25 साल में लिथियम की. लिथियम कहां से आएगा? लिथियम इंडिया तो वी आर इंपोर्टिंग. तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है. लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच है एनवायरनमेंट, एंड कैच है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो आपको बर्न करना पड़ेगा. It says that 170 cubic meters of water and releases 15 tons of CO2 for every ton of lithium extracted. 1 टन लिथियम निकालने के लिए, आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइन से 170 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, 170 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर चाहिए, और 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. 15 टन 1 टन निकालने के लिए.
एंड ये ओपन कास्ट माइन होंगी। ये वो नहीं है जो अंदर घुस गए टनल बना के ले आए निकाल के, नहीं, दिल बी ओपन कास्ट माइंस। तो मतलब अच्छा है मिल गया है, बट हाउ कॉमर्शियली वायबल इट विल बी, व्हेन इट विल बी वायबल, हाउ विल बी एबल टू, वेयर विल वी गेट दिस वाटर, वी आर ओनली वाटर स्ट्रेस्ड, एंड द डैमेज टू द एनवायरमेंट, ये सब देखना पड़ेगा। बट इसकी जरूरत है इंडिया को, बिकॉज more and more cars are going to be electric, and the demand for lithium batteries in laptops, phones, cars, uh, every damn thing you can think of is going to increase and increase. लेकिन देखो ना कितना जबरदस्त विशियस सर्कल है। हम सोचते हैं भाई हम तो बिजली की कार चला रहे हैं, हम तो तेल फूक नहीं रहे, लेकिन बिजली की कार को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। बिजली कौन? वो थर्मल प्लांट में फूक रहा है कोयला, है ना, बड़ी बड़ी चिमनियों में आप जाओ, ये भटिंडा पानीपत हो रहा वो, तो कोयला फूक के बिजली तैयार हो, बिजली से आप कार चार्ज कर रहे हो। कहते हो मेरी कार तो 0 कार्बन फुटप्रिंट है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। सो दीज आर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो पढ़ोगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओगे और ज्ञान मिल जाएगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कैन माइक्रोसॉफ्ट सक्सीड इन क्लॉइंग बैक द सर्च लीडरशिप फ्रॉम गूगल। ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, चैट जीपीटी एआई एंड हाउ माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू टेक ऑन गूगल सर्च। और ये गूगल सर्च के दिन जो है अब कुछ ना कुछ खतरे में लग रहे हैं। जो हमें इतनी आदत थी गूगल सर्च कर लो, किसी का एड्रेस चाहिए, किसी का टेलीफोन नंबर चाहिए, कोई फोटो चाहिए, कोई पीपीटी चाहिए, कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई पेपर चाहिए, गूगल सर्च कर लो। तो चैट जीपीटी विच इज ऑन बिंग सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कैन इट टेक बैक द लीडरशिप फ्रॉम गूगल, ये है। तो पढ़ लेना, चैट जीपीटी पे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। नो योर इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे, पढ़ लो, मजेदार। देखा, मैं आपको आधे घंटे में पूरा पेपर पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग क्यों 2 घंटे लेते हो? तो स्टॉप रीडिंग क्राइम, क्रिकेट एंड सिनेमा। ये हमारे आर्मी चीफ की वो बैंगलोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में है। आर्मी सेट टू क्लोज अराउंड 80 डील्स वर्थ 15,000 करोड़। ये मैंने कल परसों भी कवर किया था, रजत पंडित का आर्टिकल था, हाउ ब्रिक बाय ब्रिक इंडियन आर्मी इज मेकिंग अप डेफिशिएंसीज एंड बाइंग न्यू इक्विपमेंट। वी हैव गिवन मेडिकल असिस्टेंस वर्थ 7 करोड़ रुपीस। ये है, ये हमारा एयरक्राफ्ट है C-17, जिसमें टर्की और सीरिया में हमारी टीम गई है। तो वी हैव गिवन अबाउट 7 करोड़ वर्थ ऑफ मेडिकल एड टू दीज। Yeah, this is a very interesting development. I've been talking of this development in meeting with Raisi. She was unswearing support. तो आप देखो एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू जो जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, जिनको करंट अफेयर्स में वो है, यू नो, ईरान इज एनिमी, यूएसए का एनिमी नंबर 1 इज नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, है ना। तो ईरान को तो इतने सालों से टारगेट किया हुआ है। ईरान मीनवाइल हैज कोजिड अप टू रशिया एंड चाइना। रशिया एंड चाइना ईरान के खास हो गए। तो दिस इज visit by the Iranian president Ibrahim Raisi to China, where Xi Jinping has given him great honor and red carpet welcome. So ये प्लस एक साइड पाकिस्तान के साथ भी चाइना का है, एक साइड रशिया इज अ जूनियर पार्टनर नाउ विद चाइना। सो चाइना, रशिया, ईरान, कैन दे फॉर्म अनदर ब्लॉक टू टेक ऑन NATO एंड दिस? ये तो माइंड में रखना और कोई बात नहीं, ठीक है। This is of course on the balloons, and Taiwan says will shoot down Ukraine 6 warplane. ये मैं बता ही चुका हूं आपको। So we are done with this. Now the last paper. Last paper is Times of India. अच्छा आता है इसे, नहीं कल मैंने कवर किया था, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ज्यादा एड्स आती हैं। पहले 4-5 पेज तो फुल पेज एड्स होती हैं। और आप आइडिया लगा सकते हो कौन सा पेपर पढ़ता है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ऐड होती है IAS अकेडमीज की,
हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे फ्रंट पेज ऐड होगी मोस्टली, अनलेस गवर्नमेंट ने दे दिया सबको पूरी फोटो लगा दो। इट्स ऑफ आईएएस अकेडमीज, आईएएस के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड होती है रियल एस्टेट, यहाँ ये so anyway, so this is of course Modi Biden Macron high hail historic deal, and then we go into this, इन्होंने थोड़ा माइल्ड वो दिया है, IT officials visit BBC offices in Delhi Mumbai for survey को apostrophe में किया हुआ है, and here is will J&K find supercharge India's quest to get lithium map on the lithium map, तो will they find this supercharge, उसी के बारे में इन्होंने भी लिखा हुआ है। सो ये सब चीजें जब आप ग्रुप डिस्कशन में आएगा, कहीं लेक्चरेट में आएगा, तो अच्छे से बोलोगे, बोल्ड होके बोलोगे तो नोटिस हो गया। थकी हुई स्टेल सी बातें बताओगे तो कोई इंप्रेस नहीं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रख लो। ये कल भी मैं अपने क्लास में ग्रुप डिस्कशन चल रहा था BOCC कोर्स में, उनको यही बोल रहा था, बच्चों को यही बोल रहा था। आजकल तो मैं हमारे खूब ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं, BOCC कोर्स जो फाइनल उसमें मंथ में है, एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन इज सिंपली अमेजिंग। बहुत बहुत बढ़िया डिस्कशन होता है। या मैं लिखा था एक आर्टिकल आप लोगों के लिए, इसका प्रॉब्लम है कि एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन, फ्रंट से, इसका पीछे से देखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर फ्रंट टू न्यूज ऑफ द स्पोर्ट्स देन कम्स द एडिटोरियल। सो दिस इज वॉशिंगटन्स वाइट बलून चेस। So this is Chidananda Rajghatia. He writes a lot. He's a Washington-based correspondent, Chidananda Rajghatia. He says, is it worth using a missile which is $400,000? कितने लाख? $4 lakh की मिसाइल है भाई, ₹0 में कितने की मुझे पता नहीं। On a $400 or a 4,000 Chinese pop-up, is it the best use of American resources? He has thrown the debate on a totally different tangent. कि यार $400 या $4,000 का बलून होगा ये, जिसके ऊपर आप एक $4 लाख की मिसाइल यूज कर रहे हो, इज इट द बेस्ट? So he writes on that. Then the paper is cautioning on the, एक सेकंड इसको फाइंड करते हैं, on the rain come again. I believe the coming season, rain, it may be rain deficient. So rain forecasts are not very good. So the paper is saying government of India should get ready. Cereals get pricier. तो जो दालें हैं ये महंगी हो जाती हैं जब बारिश नहीं होगी तो। अच्छा देखो, जॉर्ज पैटन का कितना बढ़िया कोट है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बीइंग रैश। सो बच्चा पार्टी के टेक कैलकुलेटेड रिस्क। देन ऑफ कोर्स लेट्स गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ व्हीट राइस बायस। दिस इज रिटन बाय रमेश चंद। ही सेज कि मोर एंड मोर वी मस्ट कंज्यूम मिलेट्स एंड लेट्स स्टॉप ईटिंग टू मच ऑफ राइस एंड व्हीट। ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है हमारा गवर्नमेंट का, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, एंड ये रिक्वायरमेंट भी है, पानी बचाना है और हेल्थ बचानी है अपनी लोगों की, और इंडियन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, तो मिलेट्स। मोर मीनूज एंड द्रौपदीज, दिस इज एन एडिटोरियल ऑन दी, वी हैव अ फर्स्ट ट्राइबल वुमन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड नाउ मीनू मनी, 23-year-old गर्ल फ्रॉम a tribe in Kerala has got a contract for Women's Premier League for Delhi Capitals. तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि more and more women from these, they become role models for other women to rise and shine. हाँ बच्चा पार्टी तो यहाँ पे खत्म होता है अपना न्यूज एनालिसिस। अब मैं लूंगा आपके क्वेश्चन, ठीक है। आपने बहुत क्वेश्चन डाले हुए, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ओ बाय गॉड, आई थिंक जो थम्स अप मैंने दिया था शुरू में, उसके बाद शुरू करता हूँ। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू वेरी मच। कैलाश प्लीज टेल, घर में सबके फोन में चैनल होना चाहिए, तरीका यही है। घर को अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल के यशमोर यूनिवर्सिटी में लेके आना है, तो घर में जो भाई बहन फादर मदर सबके मोबाइल में ये चैनल आप जो है सब्सक्राइब कर दो,
कि जब भी वो नोटिफिकेशन आए शायद देख लें। या प्लीज लाइक द सेशन। थैंक यू अंशुल, दीपांशु, रफेल फ्रांस, मिराज फ्रांस, SU-30 रशियन, मिग रशियन, जैगुआर जैगुआर ब्रिटिश। हाँ, वेरी गुड दीपांशु, गुड नॉलेज। एयर शो का ग्लिम्स मैंने भी शेयर किया था कल टेलीग्राम चैनल पे। एयर शो के कुछ ग्लिम्स किसी दोस्त ने भेजे, मैंने कहा चलो बच्चा पार्टी देख लो। वंदे मातरम, जय हिंद। कैलाश सर, मेरे गांव में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीडिंग बेनिफिशियल है क्या? नेचुरली नहीं आएगा तो ऑनलाइन करो। ऑनलाइन एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट होगी। मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत बच्चे सर ऑफलाइन पढ़ा दो, ऑफलाइन SSB का। मैंने कहा ऑनलाइन चीप एंड बेस्ट। गुड। देखो अंकित सांगवान की लाइफ चेंज होगी जब से हमारे अंकित सांगवान सर, आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस ऑन हाउ टू मेक नोट्स एंड आल्सो और सम मैप्स ऑफ इंडिया बॉट, सो बी मिस है, कोई बात नहीं, एंड पेस्टेड देम ऑन द वॉल। दैट इज द वे, दैट इज द वे। मैप नहीं है, दो इंडिया के मैप, एक वर्ल्ड का मैप, अगर एटलस नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, थिसॉरस नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। ये टूल्स हैं ऑफिसर बनने के। वेरी गुड अंकित, जिंदगी में तुम फोड़ोगे कोई ना कोई एग्जाम। शिवानी पांडे, आर्टिकल 202 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विशेष सिंह रजावत, सर आई एम इन क्लास 10, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू बट कुड नॉट प्लीज टेल मी दैट हाउ कैन आई क्रैक NDA ड्यूरिंग। अरे ऑनलाइन पढ़ लो, एंड इफ यू आर डूइंग गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, थोड़ा सोशल स्टडीज, NDA क्लियर हो जाएगा। और क्या NDA के लिए कोई क्यों कोचिंग जाते हो यार? माँ बाप का हार्ड अर्न मनी वेस्ट कर रहे हो। अंशुल शाक्या भी 30% इंडियन है, दे स्पीक हिंदी। मैं तो हिंदी इंग्लिश बीच में बोलता रहता हूँ। शिवानी पांडे, सर जब अडानी है कंट्री में इंडिया का रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके नाम होता है, पर जब अडानी का शेयर गिर तो सिर्फ अडानी को ही क्यों, इंडिया को भी लॉस हुआ ना। यस, बहुत अच्छी बात है, सही लिखो शिवानी। यू मस्ट अटेंड दिस कम्युनिकेशन कोर्स सो दैट यू कैन राइट क्लियरली एंड एक्सप्लेन कि आप कहना क्या चाहते हो। हाँ दीपांशु, BCCI आफ्टर IPL। शिवानी पांडे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी ऐसे ही बलून से US पे हमला करता था। यस। बेस्ट इंग्लिश डिक्शनरी बुक, एनी डिक्शनरी, ये है कॉलिंस है, थिसॉर, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कोई ले लो, कॉलिंस ले लो, ऑक्सफोर्ड ले लो। ये देखो, ये मेरा थिसॉरस है जब मैं मेजर था। देखो इस पे दीमक लग गई है, ये देख लो, या मेरा नाम भी दिखा दूंगा आपको, मेजर YPS मोर। कितने साल पहले मेजर था? 30 साल पहले। देन अभी लेटेस्ट ये है। फिर मैंने ये लिया इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने ये लिया, ये कॉलिंस थिसॉरस A to Z। ये देखो, ऐसी सारी बुक्स हैं यहाँ। अब यूज नहीं करता हूँ इतना, बट हाउ टू रीड एंड स्पीक बेटर इंग्लिश, बिकॉज ये रियलिटी है। देखो बच्चों, और मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। नो कोड शुड बी फ्री फ्रॉम पार्लियामेंट, ओके। Tawfiq Rathar, sir, I am from Kashmir. I am in 2 semesters my graduation. I have been following you since last year. I have developed my personality and participate all extra. Very good, Tawfiq Rathar, very good. Next BOCC is starting in March, early March. I think 5th से लेके 10th के बीच में कोई डेट है, मुझे याद नहीं आ रहा है। आया मीन्स चमत्कार, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड प्रिंस। शिवम पालवे, हाय सर, हाय कैलाश पे, हाय सर। यस, जम्मू कश्मीर में 5.9 बैरल नहीं मिला है, 5.9 मिलियन टन्स। सर प्रदीप अथानी, सर USA building a good relationship with India, then what will be the impress going on Russia by doing this? Please improve your English। मेरे बच्चे पार्टी, प्रदीप, आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो, सब क्लास में अटेंड करते हो। अरे मैंने बताया था, देर आर नो फ्रेंड्स और फोर्स, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हम रशिया के साथ भी काम करेंगे और अमेरिका के साथ भी काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? नॉन अलाइंड है। Yeah, Kazal, I also agree with you. Why suddenly they started to shoot down this? Very good, Vikas.
You understand lithium is only a part of making batteries. Many other like cobalt, etc. are not available in India. Plus infra is not there. Jai Hind, Jai Hind. Zishan Haider, love from Ladakh, love to Ladakh. क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए, इसमें कोई डाउट है आपको? Kailash, sir, you are 60 years old, but you are very energetic. I am not 60 years old, I am 60 years young. ठीक है, हाँ, मैं रोस्टिंग करूंगा ना तो यंग बच्चों को भी मुंह छुपाना पड़ जाएगा फिर। शिवानी पांडे, सच में आपकी क्लास इतनी अच्छी रहती है कि पता ही नहीं चलता। मैं लाख स्टूडेंट टाइम में लाख स्टूडेंट होना बनता है। या एक्चुअली लैक्स मस्ट वॉच दिस। जय हिंद, वंदे मातरम। अमन पिंटो, बैंगलोर, सीरियस स्टूडेंट, ये पास होएगा, देख लेना। दीपांशु, इन माई गर्ल ऑल विलेज ऑल फैमिलीज मैरी देयर गर्ल्स आफ्टर ग्रेजुएशन। वेरी गुड। ओपन कास्ट माइन मीन्स कि खुली माइन होती है। खुली माइन ना आपको मतलब इट्स ओपन टू द एनवायरनमेंट। दूसरी माइनिंग होती है आप टनल डिग करते हो, टनल्स डिग करते हो और फिर मिनरल्स को लेके आते हो। यस, अपनी ओपिनियन रखो फैमिली के आगे हमेशा। शिवम पांडे, हमेशा पहले घर में बोलना सीखो, असर्टिव कम्युनिकेशन सीखो, ठीक है। Seats available in BOCC? Yes. First come, first basis. First come, first basis. This first time. Saurabh Dhaiya says, first time newspaper has become interested to me. सौरभ, तुमने भी BOCC करना है? इंटरेस्टेड टू मी नहीं, इट इज मेड माई लाइफ इंटरेस्टिंग, ऐसे कुछ लिखो। रिटर्न की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे। आई एम ट्राइंग टू गेट अ टीम, NDA और CDS की चीपेस्ट पॉसिबल रिटर्न का सॉल्यूशन देंगे आपको हम। सर 10th पास की बात किस मिलिट्री स्कूल में जाना? आई एम फ्रॉम कारगिल। 10th के बाद यू गो टू बैंगलोर मिलिट्री स्कूल, बैंगलोर चले जाओ, अजमेर चले जाओ। You can give mock interview, send me a number, we will fix it up. Thank you, Ankit. Ashok Reddy is right. Coaching institutions put unnecessary pressure on aspirants and also on parents. Parents कहते हैं फीस दे रखी है, अब तो पढ़। गुड सर, मेरे पापा के फोन में भी सब्सक्राइब्ड है, वेरी गुड। Sir, Pallavi Mishra, sir, what's your opinion on India, US and France deal over commercial flight of $100 billion? Is worth to buy over we work with them and technology transfer? Yeah, we have to work with them. They are leading players in technology. And इनके साथ हमारा फ्रांस के साथ तो we have had very good defense deals for so many years. मेरा होम टूर कराऊंगा शिवम पांडे। Thank you, Aman. Scintillating session. I'm preparing for NDA 2 from YouTube. Very good. PPTT for SSB, I will discuss. Diksha Chaudhary, how to change parents' perspective about education, because I think that ensuring them is not enough to change their opinions, so they need their daughters to school. How to make notes? Please watch my video. Yes, BOCC कोर्स SSB के लिए आपको प्रिपेयर करेगा, बट पहले आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस। फाल्गुनी निकोला, अडानी पोर्ट में इतना ड्रग सीज किया जाता है तो पोर्ट तक पहुंचते कैसे हैं? दिस इज द एजेंसीज मस्ट लुक आफ्टर यू एंड मी, शुड नॉट वरी। हमने सब पढ़ना है। जस्ट सेंड SMS ऑन दैट नंबर। SMS नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप कर दो, जो 2 नंबर दिए हुए हैं इसमें भी दिए जाएंगे नीचे। एंड यस, BOAC में करंट अफेयर्स भी कराते हैं। जस्ट कीप राइटिंग एंड कभी कभी फिर पुराने नोट्स देख लो, और वही टॉपिक जब दोबारा आता है तो उसके, इसीलिए मैंने बोला है मे बी आई टेक अ क्लास ऑन हाउ टू मेक नोट्स अगेन, कि कैसे बनाने। एक दिन लेता हूं क्लास। कलर ब्लाइंड नो, डिपेंड करता है कितनी डिग्री है कलर ब्लाइंड की। BOCC इज एवरी मंथ,
एंड BOC ऑल्सो एवरी मंथ। साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, कई बच्चे कर भी रहे हैं। आपकी टीम नंबर, ये टीम का नंबर आ गया अभी। यस, ये या नंबर, टीम नंबर शेयर कर दो इफ समबडी इज देयर। एंड टेलीग्राम पे आप आ जाओ। टेलीग्राम चैनल बता देता हूं मैं आपको, जो टेलीग्राम पे नहीं है उनको, जो टेलीग्राम पे नहीं है उनको टेलीग्राम नंबर दे देता हूं। ठीक है, ये कॉपी कर दिया लिंक, ये टेलीग्राम पे आ गया अभी आपके पास। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, और ये नंबर दे दिए, देखो 2 नंबर हैं ये। इन नंबर पे आप मैसेज डाल दो, एक इन दोनों नंबर पे मैसेज डाल दो आप, व्हाट्सएप मैसेज, आपको जॉब मिलेगा। ऑपरेशन अलाउड है क्या सर? हाँ बिल्कुल, उससे कोई इश्यू नहीं है। चलो, सो आके आप एक बार BOCC कर लो, एक बार BOAC कर लो, दैट शुड सफाइस। सर प्लीज ब्रिंग अ क्लास ऑन हाउ अ हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। हाँ, मैंने एक दिन बोला था कैसे ऑर्गेनाइज होता है। मेरी वो वीडियो देखो, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी फुटबॉल वर्ल्ड कप पे। फुटबॉल वर्ल्ड कप जब चल रहा था, मैंने एक वीडियो बनाई है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी फुटबॉल वर्ल्ड कप। उसको देखो, सिमिलर लाइंस पे हॉकी में भी होता है। ऑटोमोटिव 18, आई एम योर बिग फैन व्हेन यू हैव 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो इसको भी लेके जाना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे, 10 मिलियन। UPSC CDS, get your basics right, get your basics right. Yeah, but Praveen, lot of serving people are doing this BOCC course from Army, Navy and Air Force. Clerks, nursing assistants, GD soldiers, technicians are doing this course. तो आप भी कर लो, बहुत फायदा होगा आपके करियर में भी और आगे भी। चलो, तो आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर। बहुत मजा आया। ऑलमोस्ट 1 आवर कैसे जाता है मुझे पता नहीं चलता। आई जस्ट डोंट नो हाउ दिस टाइम फ्लाइज एंड आई एंजॉय। मेरा टूर कराऊंगा घर का एक दिन, वीडियो पे आप लोगों को टेलीग्राम पे कराऊंगा टूर घर का। ठीक है, चलो, तो लव यू ऑल। स्टे गुड, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी से दूर रहो। ठीक है, चाहे वो न्यूज की नेगेटिविटी हो, व्यूज की नेगेटिविटी हो या लोगों की नेगेटिविटी हो, दूर रहो, हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट देन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑटोमोटिव 18, रोहित एंड प्रिंस, शिवम, प्रवीण। 3rd September, जय हिंद। थैंक यू अमन राज, थैंक यू वेरी मच। चलो, बाय, सी यू। बाय बाय, बंद करता हूं अभी, है नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन खत्म।